Welcome to Shalimar Gardens, one of the most treasured landmarks of Lahore, Pakistan, and a proud UNESCO World Heritage Site. This magnificent garden is not just a place of beauty. It is a living symbol of the Mughal Empire's vision of paradise on earth. Built in 1641 during the reign of Emperor Shah Jahan, the creator of the Taj Mahal, Shalimar Gardens were designed as a royal retreat. The Mughal emperors believed that gardens represented heaven, and Shalimar Gardens perfectly reflect this belief through balance, symmetry, and harmony with nature. The gardens are spread across 3 grand terraces, each built on a different level. These terraces are known as Farah Baksh, meaning bestower of pleasure, Faiz Baksh, meaning bestower of goodness, and Hayat Baksh, meaning bestower of life. Together, they form a breathtaking landscape where architecture and nature exist in perfect unity. One of the most remarkable features of Shalimar Gardens is its advanced hydraulic system. Water flows gracefully through the gardens, feeding 410 fountains, cascading waterfalls, and reflective pools. Even centuries ago, Mughal engineers mastered water management, creating a cooling effect that still refreshes visitors today. As you walk through the gardens, you'll notice elegant marble pavilions, ornate walls, and beautifully carved stonework. These structures once hosted royal gatherings, poetry recitals, and celebrations under the open sky. The sound of flowing water and chirping birds creates a peaceful atmosphere, offering a moment of calm away from the busy city. Shalimar Gardens were not open to the public during Mughal times. They were reserved exclusively for the royal family and court nobles. Today, however, this historic masterpiece welcomes visitors from around the world, allowing everyone to experience its timeless charm. In 1981, Shalimar Gardens were officially recognized as a UNESCO World Heritage Site, highlighting their global cultural and historical importance. Despite the passage of time, the gardens continue to stand as a reminder of Lahore's rich past and the artistic excellence of the Mughal era. As the sun sets and golden light reflects off the water channels, Shalimar Gardens reveal their true magic. A place where history whispers through the trees and fountains dance in silence. Thank you for joining us on this journey through World Heritage. Shalimar Gardens, Lahore. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more stories of history, culture, and heritage from around the world. خوش آمدید شالیمار باغ، جو لاہور کا ایک عظیم تاریخی شاہکار اور پاکستان کا قابل فخر یونیسکو عالمی ورثہ ہے۔ یہ باغ صرف خوبصورتی کی علامت نہیں، بلکہ مغل سلطنت کے فنی تعمیر، فطرت سے محبت اور جنت کے تصور کی زندہ تصویر ہے۔ شالیمار باغ 1641 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ یہ وہی بادشاہ تھے جنہوں نے تاج محل جیسا بے مثال شاہکار دنیا کو دیا۔ شالیمار باغ شاہی خاندان کے لیے ایک آرام گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا، جہاں بادشاہ اور درباری فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ باغ 3 خوبصورت سطحوں پر مشتمل ہے، جنہیں فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش کہا جاتا ہے۔ ہر سطح اپنی الگ شناخت رکھتی ہے، مگر تینوں مل کر ایک مکمل اور متوازن منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ ترتیب مغل دور کے اعلیٰ ذوق اور انجینئرنگ مہارت کی بہترین مثال ہے۔ شالیمار باغ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا شاندار آبی نظام ہے۔ باغ میں 410 فوارے، آبشاریں اور حوض موجود ہیں، جن میں پانی نہایت نفاست سے بہتا ہے۔ اس نظام کو
उस तरह डिज़ाइन किया गया था कि शदीद गर्मी में भी बाग का माहौल खुशगवार और ठंडा रहे। बाग में मौजूद संगमरमर के पवेलियन, नफीस नक्श व नगार और खूबसूरत दीवारें मुग़ल फ़नी तामीर की अज़मत को ज़ाहिर करती हैं। यहाँ कभी शाही महफ़िलें, जश्न और मशारे मुनक़द हुआ करते थे। बहते पानी की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट इस मकाम को सुकून और रूहानी कैफियत अता करती है। मुग़ल दौर में शालीमार बाग आम लोगों के लिए बंद था और सिर्फ शाही ख़ानदान और अमरा को यहाँ आने की इजाज़त थी। आज ये बाग हर ख़ास व आम के लिए खुला है और लाहौर की तारीख़ी शनाख्त का एक अहम हिस्सा बन चुका है। 1981 में शालीमार बाग को यूनेस्को ने आलमी वर्था करार दिया, जो उसकी तारीख़ी, सक़ाफ़ती और आलमी अहमियत का वाज़ेह सबूत है। आज भी ये बाग माज़ी की आज़मत और फ़नकाराना हसन की दास्तान सुनाता है। जब सूरज ग़ुरूब होता है और रोशनी पानी पर झलमलाती है तो शालीमार बाग एक ख्वाबनाक मंजर पेश करता है, जहाँ तारीख़, फितरत और फ़न एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ शालीमार बाग, लाहौर के उस तारीख़ी और सक़ाफ़ती सफ़र में हमारा साथ दिया। मज़ीद मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।